वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दिस इज गौरव अयान एंड वेलकम बैक टू द शो। गौरव अयान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे, अभी भी जो रिसेंटली टीम अनाउंस हुई है प्लेइंग 11, उस पे हम डिस्कशन करेंगे और थोड़ा सा मैच प्रीव्यू करेंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड पे भी बात कर लेंगे, थोड़ा सा इंडिया पे भी बात कर लेंगे। हमारे साथ मिश्रा जी, रुपेंद्र एंड एक ऑस्ट्रेलियन फ्रेंड लुका, हम लोग तीनों जन सब कोई साथ में है शो पे। तो गाइज, वेलकम बैक टू द शो। Thank you, Yeah, Gaurav. thank Always you. a pleasure. Thank you. I Anytime. also Thank you, welcome. Gaurav. I also welcome Lucas. Always as usual, ready to go. Yep, ready to go as always. Let's do it. Yeah, welcome, Lucas. How are Thank you you very feeling, much. man? And we should I'm feeling good. appreciate Thank you. How the are you dedication feeling? towards the game for Lucas, Yes, because he's still feeling sleepy and he has joined us for the conversation on cricket. Absolutely. Absolutely. Let's do it. Okay, we should announce the team first for our viewers. The team will be the team who has the team. Sorry, the playing 11 will be Virat Kohli, the captain; Rohit Sharma, Shubman Gill, Cheteshwar Pujara, Ajinkya Rahane, Rishabh Pant, Ravindra Jadeja, Ravichandran Ashwin, Jasprit Bumrah, Ishant Sharma, and Mohammad Shami. This is the playing 11, guys. So we will take the first take to Lucas. Lucas, any surprises, or you were expecting this time this team? I was actually expecting Mohammad Siraj to play. A little bit, surprised with that. I honestly thought, they would not so much drop, but not play Ishant Sharma. Since Siraj did very well in Australia with that 5 wicket haul, I was a little bit surprised with that. I've got nothing against Ishant Sharma. He's a wonderful bowler over for many years for India, but I feel like this was Siraj's time. Considering he's much younger than Ishant, and I just thought, he could have maybe, made this Test match his and let everybody know that he is the right bowler to belong into that Indian attack. So a little bit surprised at that. With the batting lineup, not so much. That's probably standard as usual. But yeah, probably would have gone with Siraj. Also, a little bit surprised with Jadeja. Now, obviously, his batting has improved over the last 2 to 3 years. No doubt about that. But I just thought maybe they would have, put in Siraj. But it is what it is, and they just have to believe in that team that will get them the win. Lucas, one question, mate. I want to ask with you. Yes, You have said Mohammad Siraj has performed really well in the Australian series, right? What about the yes. guy who is continuously performing for India for a very long period of time, and his record exactly? I have shared you in the Twitter also. His record is quite remarkable in last 3 years. So what about that guy who is continuously performing for a very long period of time? Well, there's no doubt that Ishant Sharma is a And special Lucas, bowler, and one he's more thing, been Lucas, one more thing. And he is only 32 and 33 years old. I don't think he is not that much old. well, not that much older. But I've got nothing against Ishant Sharma. He's a wonderful contained bowler. He can bowl a lot of overs, and his economy rate is very good. He's been with England for a lot of years. Probably the most experienced bowler um, in that attack. But I just thought, with Siraj is because he's much younger. I just feel like was his time. Time to scruff the grab the ball by the horns and say, what, I deserve this ball. I deserve to be in this bowling attack. And he showed brilliance in Australia. And I just thought, with the conditions the way they are, it's going to be a bowling Test match. I don't expect to see a 350, 400 score. I would have thought, what, he would have taken the ball by the horns and took some wickets and really stamp his authority in this Test match. You got to feel for the man who hasn't played any. He's not playing any white ball format. Ishant Sharma, I'm talking about, and he is permanently a red ball member. You are talking about Siraj. Siraj time will come. He is very much younger.
I think he will play for a very long period of time, and World Test Championship. Forget about Red Ball. He will definitely be part of white ball format also. So you got to give the credit where it is due for Ishant Sharma. I think Ishant needs to play, and he has waited enough time for to play a World Test Championship final. It is like a World Cup for the red ball specialists like Ishant Sharma, Ajinkya Rahane, Cheteshwar Pujara, and all. Yeah, like I said, I don't have anything bad for Ishant Sharma. He's been around for a very long time. And he's done well. Overseas. Been very crucial in getting wickets. Against Australia in Australia. Getting wickets in England. But I just thought, this was Siraj's time. But you know what? They've gone with Ishant. He's experienced. And this at the end of the day, this is a final. So you need your most experienced players playing. Exactly. But I just thought it might have been Siraj's time, but they have gone with Ishant, and only they can be criticised. Whether it will work, whether it won't work, and if it does, well, nobody will complain. They'll say, "Oh well, Ishant Sharma, still got it. He's still going to be in the team for a long time." And if Ishant Sharma has a poor test, people are going to say maybe they should have picked Siraj. So only time can tell. Okay, we'll get back to you, Lucas, and we'll be moving towards Mishra and Rupendra also. They are also waiting for you for their turn. Mishra ji, what's your take on the team? आप हिंदी में भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारे हिंदी ऑडियंस को भी सुनना चाहिए Yes, कि yes. कुछ हिंदी में सुनने को मिले. मिश्रा जी, Yes, आप yes. टीम आप एक्सपेक्ट यही कर रहे थे या फिर कुछ डिफरेंट कर रहे थे? नो नो नो, ये टीम बिल्कुल मैं यही टीम एक्सपेक्ट कर रहा था विदाउट डाउट। और हालांकि जो मैं टीम बना रहा था उसमें मैं सिराज को थोड़ा सा आगे रख रहा था ईशांत से, पर मुझे मालूम था वो ईशांत के साथ ही जाएंगे, क्योंकि ईशांत का जो एक्सपीरियंस है वो चीज हमको मालूम था। देखिए, ये 3 महीने का परफॉर्मेंस की बात नहीं है, ये 3 साल 2.5 साल की परफॉर्मेंस की बात है। एग्जैक्टली. मैनेजमेंट ने उनके ऊपर भरोसा दिखाया, ये होना भी चाहिए था। हालांकि सिराज रॉ पेस है, पर ऐसा बहुत बार होता है कि आप एक्सपीरियंस को ज्यादा तवज्जो देते हैं जब आप एक मैच खेल रहे हैं। ईशान का परफॉर्मेंस भी अच्छा है, WTC में परफॉर्मेंस अच्छा है, तो मेरे हिसाब से यही होना था और यही हुआ। बाकी अभी ये डिबेट खत्म करके हम सबको सपोर्ट करना चाहिए, ईशान को सपोर्ट करना चाहिए, ताकि हाँ, जब वो बुरा करेंगे अभी प्रेशर हमारे ऊपर है, क्योंकि हमने ये टीम या फिर जो भी इस टीम को बोला था। तो मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी गुड टीम, और अश्विन जडेजा भी है, मैं खुश हूँ, लेकिन प्रेशर मेरे ऊपर है कि ये टीम भी अच्छा करे और टीम को जीत दिलाए। सो दैट्स माय पॉइंट। रुपेंद्र, आपका क्या टिप्पणी है इस पे? एग्जैक्टली। आपको तो पता होगा कि मैंने पिछले भी शो में 2-3 जहाँ पे भी हम लाइव थे वहां पे कहा था कि दोनों अश्विन और उसके साथ जडेजा दोनों खेलेंगे, लेकिन मैंने नहीं कहा था कि सिराज अपनी टीम में होगा, क्योंकि मैं तीनों जो एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर थे लाइक सिराज, सॉरी शमी, ईशांत और बुमराह, ये तीनों मेरे पेसर्स थे। मेरी जो टीम थी जो प्रेडिक्टेड 11 किया था, मैं कोई सरप्राइज नहीं हुई कि ये टीम में एज एक्सपेक्टेड था कि यही टीम इंडिया की खेलने वाली थी, चाहे वो कितनी भी जूसी विकेट हो या चाहे आपके ओवरकास्ट कंडीशन हो, क्योंकि आपको पता है कि जडेजा जैसे बेस्ट ऑलराउंडर को आप ये नहीं कर सकते। उसी के साथ अश्विन का जो एक्सपीरियंस है, आपको पता है उसने जो हाल ही फिलहाल जो भी सीरीज है उसे या 2-3 साल से ऐसे परफॉर्म कर रहे हैं कि भाई आप उनको प्लेइंग 11 से हटा ही नहीं सकते। तो यही एक्सपेक्टेड था कि सेम टीम खेलने वाली है, और वही सेम आपको स्क्वाड में दिखा। Okay, guys, point taken. It's time for me to tell my point of view. I was expecting the same team. I was backing for Ishant Sharma what he has done in for the very long period of time for India. मैं यही टीम उम्मीद कर रहा था। और जो एक जैसा मैं बार बार कहता हूँ, जो एक प्रोसेस होता है, जैसे जो आपकी मेन प्लेयर्स हैं वही वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलने चाहिए, और यही लोग इस टीम का हिस्सा बने हुए थे बहुत दिनों से। एक खाली शुभमन गिल एक नए खिलाड़ी आया है वो, और रोहित शर्मा कुछ 1 साल से मतलब कुछ 6 महीने या 1 साल से इस टीम का हिस्सा। बाकी मोस्टली अगर आप देखें तो बहुत दिन से ये सब प्लेयर है, चाहे आप मिडिल ऑर्डर चतेश्वर पुजारा से लेकर आप रविचंद्र अश्विन, बहुत सारे खिलाड़ी, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत, ये सब बहुत दिन से खेलते आ रहे। तो मेरे हिसाब से जो टीम बहुत पहले से, तो उसी टीम के साथ आपको जाना चाहिए था। यू शुड बैंक ऑन योर एक्सपीरियंस गाइज टू परफॉर्म वेल इन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। You can't pick a player who has performed very well in the one series, and you can avoid that player who is performing very well over the years
continuously for Team India, and that is what Ishant Sharma is doing for Team India. I think he should have got the chance ahead of anyone in this team. This is what I think, because he has played over 100 of the test matches for Team India. You should not be forgetting his name in the test side. This is what I think. Okay, moving to the Lucas. Lucas, my question is to you. The combination of three fast bowler and two spinners are look much balanced, or you should have gone with four fast bowler and one spinner? Yeah, I probably would have. Yeah, the ICC just released the pitch, and it's very important not to get fooled by it. At this point in time, it does look green, but in England you have to bowl fuller to give them the swing every chance for its full effect. And some teams, when they go to England, they bowl too short. And New Zealand adapted that very well against England. They bowled very good lines, very full deliveries, and led by Southey, Bolt, and Henry. Ragnar, of course, just bowls short regardless of what pitch it is. That's the way he bowls. So I'll exclude him from this. But India, their bowlers have to bowl fuller. You can't get away with bowling short in India and Australia. You have to pitch the ball in England. And with what they did, this is why I like Siraj in that team, because he bowls it full. He did that in Australia. He gave every chance for that swing to happen in Australia. I like Ashwin as a spinner. I think what I said yesterday, that a spinner has to be in every test, no matter what the pitch is. Now Jadeja, he might not bowl overs. He might only bowl 2 overs. He might only bowl 3. He may not even bowl at all. Exactly. But he is there to be a batsman. And there's no doubt his batting has improved over the last 2 to 3 years. No doubt about that. He's proven to be himself a good batsman. But I said to you yesterday, this is going to be a bowling test match. And I think you need to put in that extra seamer. Especially like Siraj, who bowls it full. But like I said, we have to wait and see. Not my personal preference. I would have went with Siraj over probably Jadeja or Ishant Sharma. But India also like using Ashwin and Jadeja because of Jadeja's batting. Even Ashwin can bat as well. He's been very good with the bat. He was okay with the bat in Australia. I can't agree with what they did picking, the two spinners. But like I said, Jadeja might not bowl. He may not need to bowl. But I would have liked that extra seamer, since it's going to be bowling conditions. And but like I said, we'll have to wait and see. So you would have gone with the 4 seamer and 1 spinner, right? Yeah, so that is correct. Yes, for these conditions, yes, I would have. Okay, and you were telling about New Zealand that they have bowled well in English condition. I think you are forgetting the most of the bowlers are swing bowler, proper swing bowler, and they will definitely pitch up. Okay, and in India, I don't think there are a proper swing bowler. Okay, that's the main problem. Okay, moving on to the Mishra ji. Mishra. Okay. Yes. Just I will answer Lucas' question in English. Let me explain you why these 2 spinners are taken. Why 2 spinners are chosen. Let me explain you. Hope you may agree at the end. It's purely because of this, the fact that these 2 spinners are very good batsmen also. So in case the situation, yes, that's why. Even you pick 4 spinners, 4 seamers, the 4th seamer can't bat, as Shardul has not been selected. So these 2 spinners can bat, and also the bat well. The Indian batting again goes deep. As you said, normally in test match, 4 bowlers are used. If you see or you consider, the 5th bowler, the 5th option is always lagged a bit. So in my opinion, 3 pacers, 1 spinner, or adding on to that another spinner, and both can bat. In that situation, I feel that's why they have chosen the team. Yes, that's okay, guys. Go ahead, Lucas. Yes, that's why I said that. Jadeja may not need to bowl.
Yes. New Zealand's India's bowling unit might bowl New Zealand out cheaply, and he may not have to bowl. And like I said, his batting has improved the last 2 to 3 years. He's made a lot of 50s, he's made 100. He gets out the sword celebration, which is flamboyant, everybody likes. And I hope I see more of that. But it's very difficult in England, in those conditions with those seam bowlers. So in my opinion, I think it is a risk, but we have to wait and see if it pays off. ओके मिश्रा जी, आपने फिर भी आंसर नहीं दिया. आप 3 फास्ट बॉलर और 2 स्पिनर के साथ खुश हैं? फिर हम रुपेंद्र जी का भी टेक लेना चाहेंगे. मैं तो ये पिछले 1 महीने से बोल रहा हूँ, ये तो मेरे टीम में थे 3 फास्ट बॉलर्स एंड 2 स्पिनर्स. मैं कब से ये बात बोल रहा हूँ. नो डाउट अबाउट इट, वेरी हैप्पी. Pressure is on me that they should perform well. I am really happy with the 3 pacers and 2 spinners. रुपेंद्र जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी अपने टीम में 3 फास्ट बॉलर रखते और 2 स्पिनर रखते, या फिर आप 4-1 के कॉम्बिनेशन के साथ जाते? You can unmute first, Rupendra. You are in mute. Rupendra, you need to unmute first, then you can speak whatever you want to speak. No. Yeah. Now you can go ahead. Rupendra, go ahead. Are you? Yes. Totally agree with मिश्रा जी, जो कि मैंने कहा कि 3+2 के साथ ही जाता हूँ, क्योंकि मिश्रा जी को पता है कि मैं मेरे शो में और आपके शो में पहले से कह रहा कि मेरी जो प्रेडिक्टेड 11 थी उसमें दोनों स्पिनर खेलेंगे, लाइक जडेजा उसी के साथ अश्विन, क्योंकि आपको पता है कि जडेजा एंड अश्विन प्रोवाइड यू स्टेबिलिटी, राइट. दे कैन बॉल, दे कैन बैट इन एनी कंडीशन. अगर आपका टॉप ऑर्डर फ्लॉप होता है तो भी आपके पास जडेजा है और अश्विन है, जो आपको एनी कंडीशन आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं बैटिंग से. उसी के साथ साथ बॉलिंग, और जडेजा का एक एडिशनल ये है कि आपको वो लाइक फील्डिंग में काफी एक प्लस पॉइंट दे देता है. अगर आपके पूरे मैच में एक सिंगल रनआउट भी अगर जडेजा ने कर दिया, उसी के साथ अगर आपके कुछ रन भी बचा लिए, तो यहाँ पे एक आपको एडेड एडवांटेज हो जाता है. वही अगर न्यूजीलैंड की बात करें तो उनके पास भी काफी बेस्ट एथलेटिक्स है, और वही अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पे एक लिमिटेड है, जैसे कि अश्विन हो गया. आप थोड़े फ्लफी होते हैं और फास्ट बॉलर से उतने इन्हें एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप टाइट फील्डिंग करें. तो यहाँ पे एक एडेड एडवांटेज था कि जडेजा और अश्विन मेरे प्लेइंग 11 में पहले से थे. उसी के साथ जो 3 पेसर थे वो भी जो एक्सपीरियंस पेसर है उसी के साथ में जाऊंगा, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में मैं रिस्क नहीं लेना चाहता या कोई काम चला हुआ वाला काम नहीं करना चाहता था. ओके, पॉइंट टेकन रुपेंद्र जी. अब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे देता हूं कि मुझे भी यही लग रहा था कि जब मैंने टीम देखा, जब शार्दुल ठाकुर उस टीम में नहीं थे, तो आई वाज 110% श्योर दैट इंडिया विल गो विद द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 फास्ट बॉलर एंड 2 स्पिनर. दैट विल बी Ravichandra Ashwin, Ravindra Jadeja, and Ishant Sharma, and whatever they wanted to pick. I think currently the team stands Ishant Sharma, Mohammad Shami, and Jasprit Bumrah. So once Shardul Thakur was not in the squad, in the 15-member squad, it was almost clear that 2 spinner will definitely play. Okay, so we'll move on to Lucas. Once you saw the Indian team, once the squad was announced, Shardul Thakur wasn't in the team. So that was, I think it was enough to indicate that Ravindra Jadeja and Ravichandra Ashwin both will play because they also bats well. Okay, go ahead, Lucas. Yeah, like I said earlier, no, this isn't going to be a batting test match. We're not going to see scores of 350, 400. This is going to be, a predominantly a bowling test match. The way the pitch is, it looks like it's going to be. The conditions, there's a lot of chance of rain, so it's going to be overcast. There's not going to be many sunny days. So that's probably why I would have went with the extra seamer as well. It's one of those test matches where a 60 or 70 can be the difference from either side. Now Jadeja batting has improved. He could be that difference with his batting. He could make a 50 or 60. And in a bowling test match where you got probably 15 wickets fall in one day. Now that 50 or 60, it may not sound very much, but that can be crucial in a test match like this. Exactly. And he's been bought because of his batting. Now I understand that India do like using Ashwin and Jadeja. They used him in Australia,
Unfortunately, Jadeja got injured. But he did all right in his matches in Australia. Ashwin did superbly in his matches in Australia, changing his pace up and down, which surprised the Australians. Now, I'm not saying that's going to happen in England, because again, he may not even bowl. If Sharma and Shemi, keep taking wickets, and Bumrah, Ashwin may not even bowl. So it's going to be one of those test matches where it's going to be low scoring. 260, 270. First innings could be a winning score. More. That's why I would have picked an extra seamer, knowing that this is going to be a low scoring game. But India have backed Jadeja in past series. Not just at home but away, because of his batting. So again, it's just a wait and see. I do worry for Jadeja's, in these conditions, because they're different to what Australia is, they're different to what India is, and New Zealand have world-class bowlers in those conditions who pitch it up full, and so he has to handle that, and so does the Indian top order and middle order. Even Kohli has to handle that. Kohli's not, he's human. We saw Kane Williamson struggle, against England in those 2 test match series. Kohli, may struggle. He may get a low score, and that's why it's very important for Jadeja, to make runs. Okay, Lucas, before you go, you have to answer one question. One of my friend has asked this question to you. India will score 350, Lucas, and if the conditions are bowler friendly, then 3 pacers are enough to take 20 wickets. Well, if 3 pacers take 20 wickets, there won't be scores of 350. It will be a low scoring game. I think this is a game where, we could see 15 wickets fall in one day. That's why I don't believe, it's going to be a 400, 350 pitch. We saw that with India. They got rolled in their home conditions. A little bit embarrassing in that second test in the against New Zealand in their second innings. That could well happen to India. If they win the toss and bat, that could well happen to India. They could be bowled out for 200, 150, and be it so can New Zealand. So I don't think India or New Zealand will get 350 in their first innings. Okay, mate, if India will manage to score 350, we will definitely get back to you. Thanks for the time right now. Okay, I hope your prediction will go wrong like Michael Vaughan prediction goes wrong like that. Okay, thanks for the time, Lucas. We'll leave you here and you go and sleep. We'll join you later. Thanks for the time. Have a great day. Go sleep, mate. No problem. If I'm wrong, there's no doubt you'll be on me. So I hope I'm right, because I don't want to be ganged up on. Lucas, I will definitely get back to you, mate. I will not leave you. Lucas, within 45 minutes, I will be tagging you in Twitter space. I will not leave you. If you want to come in, you can come in. Okay. Okay. Go. You can go. Yeah. Trust me, I'll hear from it either way. Okay. Thank you so much, guys. Have a great night. Lucas. Take care. Have a good night. Thanks for the time, Lucas. Go ahead, bye. Go and sleep. Okay, अब हम लोग थोड़ा देर हिंदी के लिए शो कर लेते हैं. अच्छा हुआ प्रेडिक्शन हम लोगों ने उनसे ले लिया. उन्होंने बोला 350 नहीं बनेंगे. ठीक है. आई होप उनका प्रेडिक्शन रॉन्ग हो जाए. हम लोग 350 करें. अच्छा गाइस, इंपॉर्टेंट, अब थोड़ा सा हिंदी में शो कर लेते हैं हमारे हिंदी ऑडियंस के लिए. गाइस, टीम तो वैसे एक्सपेक्टेड थी. आप प्लेइंग 11. अब न्यूजीलैंड ने अभी अगर किसी को न्यूज मिला तो आप मुझे बता दें. अभी तक मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड ने प्लेइंग 11 अपना नहीं बताया, राइट? नहीं. तो ये क्या उनका मतलब, ये अभी भी सरप्राइज? वैसे मोस्टली उनके प्लेइंग 11 तो फिक्स ही होंगे. अभी वो भले अनाउंस नहीं करेंगे. उनके पास ऑलरेडी वो एक ही स्पिनर है मेरे ख्याल से. एजाज पटेल विल डेफिनेटली प्ले. रुपेंद्र, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? ऑब्वियस, एजाज पटेल तो खेलना ही चाहिए और खेलेगा भी, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया अगर 2 स्पिनर से ज्यादा है तो ऑब्वियस न्यूजीलैंड एक स्पिनर के साथ तो जाएगा, क्योंकि ये रिस्क नहीं ले सकता. क्योंकि आपको पता है कि साउथ हैमिल्टन का जो भी हिस्ट्री रहा है उसी के साथ साथ जो भी वेदर कंडीशन है, लेकिन आपके एक स्पिनर तो खेलेगा ही खेलेगा, क्योंकि उनके टीम में ऐसा कोई ऑलराउंडर भी नहीं है, जो बैट्समैन भी नहीं है कि जो
कुछ और डाल सके स्पिनिंग में, जो रूट जैसा जो इंग्लैंड के पास अवेलेबल है। लेकिन मुझे लगता है कि एजाज पटेल तो खेलेगा। यहाँ पे क्वालिटी ग्रैंड होम का खेलना मुझे तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। शायद ये मिश्रा बात जी से आप मिश्रा जी बात करेंगे। मिश्रा जी आप इन पे एग्री करेंगे रुपेंद्र जी से? किस चीज पे? ये वो बोल रहे पहले तो कॉलिन डिग्रैंड का खेलना मुश्किल है। अगर मेरे हिसाब से, अगर मेरे से पूछा जाए, क्योंकि डैरल मिचेल टीम में नहीं है तो डेफिनेटली वो खेलेंगे। वो शायद 6 नंबर या 7 नंबर पे बैटिंग कर सकते हैं। देखिए कॉलिन डिग्रैंड जी बोलिए गौरव जी बोलिए। मेरे से अगर पूछा जाए, आई थिंक कॉलिन डिग्रैंड हो मेरे टीम में होंगे। मैं अपनी प्लेइंग 11 बता देता हूँ। इंडियन टीम के तो अनाउंस हो चुकी है, मैं अपनी प्लेइंग 11 बता देता हूँ न्यूजीलैंड की। ऑब्वियसली नंबर 1 पे होंगे जो उनके नेक्स्ट, उनका नाम मैं भूल जाता हूँ बार बार, टॉम लेथम, राइट? नंबर 1। नंबर 2 पे वो जो उन्होंने जिन्होंने डबल 100 स्कोर किया था, डेवन कॉनवे। नंबर 3 पे केन विलियमसन। नंबर 4 पे रॉस टेलर। नंबर 5 पे निकोलस। नंबर 6 पे आप आराम से बीजे बॉटलिंग, नहीं तो कॉलिन डिग्रैंड होम को खिला सकते हैं। चलिए, तो मैं कॉलिन डिग्रैंड होम को खिलाऊंगा। 7 नंबर पे आप उनको ऐड कर सकते हैं। 7 नंबर पे आप बीजे बॉटलिंग को ऐड कर सकते हैं। 4 फास्ट बॉलर जो रहेंगे, 4 फास्ट बॉलर के साथ में जाऊंगा एजाज पटेल। आई थिंक न्यूजीलैंड पिक करेंगे या नहीं करेंगे, आई एम नॉट श्योर। 4 फास्ट बॉलर उनके वही रहेंगे, नील वैगनर, टीम साउदी, ट्रेंट बोल्ट और काइल जेमिसन। ये रहेगी मेरी प्लेइंग 11। अगर एजाज पटेल खेलेंगे भी तो कॉलिन डिग्रैंड होम ही बाहर होंगे, यही मुझे लगता है। ये होगी मेरी प्लेइंग 11। मिश्रा जी आप अपनी बताइए। देखिए बिल्कुल वही होगा। अगर एजाज पटेल को नहीं खिलाते तो उनको 15 से भी बाहर रख सकते थे, लेकिन पता नहीं उन्होंने अगर 15 में सिलेक्ट किया तो कहीं ना कहीं उनके मन में है कि वो एजाज पटेल को खिलाएंगे। और एजाज पटेल अगर जैसे आपने बोला ग्रैंडहोम विल बी आउट एंड एजाज पटेल विल बी इन द प्लेइंग 11। बाकी सब सेम है। रिस्की है 4 फास्ट बॉलर पे जाना, बट आई वोंट बी सरप्राइज इफ दे गो विद 4 फास्ट बॉलर्स। दैट्स माय पॉइंट अबाउट। और उनकी स्ट्रेंथ भी तो अभी फास्ट बॉलिंग है, तो उस हिसाब से फास्ट बॉलिंग ही पे ही जाना चाहिए उनको मेरे हिसाब से। अच्छा, मेरे ख्याल से एक क्वेश्चन है, लंबोदर मलिक जुड़े हैं। यार क्या बात कर रहे हो, कवर पीएसएल। गाइज पीएसएल कवर जरूर करेंगे। प्ले ऑफ्स होगा तो हम कोशिश करेंगे कुछ देर पीएसएल के भी निकालेंगे। आई थिंक अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल लंबोदर जी, रेड हॉट टॉपिक कोई नहीं है। लंबोदर जी अगर आप सुन रहे हैं, मेरा आपसे एक सवाल है, कल के लिए आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? थोड़ा चैट बॉक्स में बताइए। कॉलिन मनरो विल प्ले आईपीएल, इनका एक सवाल और भी है। खैर लंबोदर जी को मैं बता देता हूं, उनका नाम लंबोदर जी है ना, लंबोदर मलिक जी। आप हम लोग कोशिश करेंगे कि जब प्लेऑफ्स होगा तो हम लोग जरूर समय निकाल के पीएसएल कवर करेंगे। पर अभी जो रेड हॉट टॉपिक है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल कल से स्टार्ट होने वाला है, तो इसीलिए अभी इंडिया में सभी लोग वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की ही बात कर रहे हैं। तो जैसे ही स्टार्ट होगा प्लेऑफ्स, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि उनके ये पीएसएल के लिए भी टाइम निकालेंगे। आई होप आप हमारा शो देख रहे होंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे हमारे शो के साथ। गाइस फाइनल टॉपिक, कल जो भी टीम टॉस जीते तो आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? रुपेंद्र जी आप पहले बताइए। ऑब्वियस बैटिंग। मैं तो फर्स्ट चूज करूंगा कि जो भी टीम जीतेगी वो पहले तो बैटिंग करना चाहिए, चाहे डेस्परेट, क्योंकि मैं आप कह सकते हैं कि कंडीशन आपके फेवर में नहीं रहेंगी, लेकिन क्योंकि आपको पता है कि रेन काफी कभी भी हो सकता है। अगर आप फर्स्ट बैटिंग करेंगे तो यहाँ पे शायद मे बी आपको थोड़ा बहुत एडवांटेज हो सकता है, क्योंकि बारिश होने के बाद आपको प्ले करना, आपको पता है कि आपने सेम गोज विद 2019 जो वर्ल्ड कप हुआ था, चाहे वो ओडिया वर्ल्ड कप हो, वहां पे भी लॉस हुआ था क्योंकि अपन सेकंड बैटिंग कर रहे थे, वहां पे रिजर्व डे आ गया प्ले में और फिर वो कंडीशन अपने हिसाब से नहीं थी। तो मैं भी प्रीफर करूंगा कि अगर इंडिया टॉस जीता है तो फर्स्ट बैटिंग करें। और मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड भी सेम अप्रोच से रहेगा कि न्यूजीलैंड अगर टॉस जीता है तो वो भी सेम बैटिंग ही चूज करेंगे फर्स्टली। मिश्रा जी, व्हाट विल यू डू वंस यू विन द टॉस? कॉपी एंड पेस्ट, सिंपल। ओके, इस पे मेरा टेक ये है कि आई थिंक यू नीड टू बैट फर्स्ट ऑन द बिगर मैचेस। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल से बड़ा मैच हो नहीं सकता टेस्ट क्रिकेट की अगर बात की जाए तो। आई थिंक जो भी कंडीशन हो, चाहे ओवरकास्ट कंडीशन हो, जैसा कि कुछ दिन पहले हमारी विजय लोकपाली सर से बात हुई थी, अगर गेंद स्विंग नहीं की ओवरकास्ट कंडीशन में, अगर बारिश नहीं हुई, गेंद ज्यादा हिला नहीं, तो आप क्या करोगे? आप गेंदबाजी करके पहले फंस जाओगे। तो आई थिंक इन द प्रेशर कुकर सिचुएशन लाइक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल इज, आई थिंक यू नीड टू बैट फर्स्ट। गाइस
एक प्रिडिक्शन लास्ट में जाते जाते, आई थिंक एवरीबडी इज सपोर्टिंग इंडिया। कल अगर इंडिया बैटिंग करती है तो आप कितना पे स्कोर देखना चाहेंगे दिन के खत्म होने पे, रुपेंद्र? I might see 200, around 200, with the wicket of 2-3. It will be fine. अगर पूरा मतलब पूरे दिन में 200, सिर्फ 200? अगर पूरा खेल होता है तो सिर्फ 200? नहीं मैं आपको हियर नहीं कर पाया। या कॉशियस, अगर आपका पूरा दिन अगर होता है तो मे बी एक्सपेक्ट ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन अगर 90 ओवर का मैच हुआ तो अराउंड 250, नॉट मोर देन दैट, क्योंकि आप रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि आपको पता है, लेट्स सी। मिस्टर जी, 257 to 267 विद द लॉस ऑफ 5-3। 5, ओके। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मेरी प्रेडिक्शन, मैं अपनी प्रेडिक्शन में बता देता हूं। मैं तो चाहता हूं 230 रन ही बने पर 2 विकेट गिरे। आज के लिए ये मेरा प्रेडिक्शन है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। गाइस, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। कोशिश कीजिए, अगर देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो भी सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये क्रिकेट का कंटेंट है और क्रिकेट से रिलेटेड ही चैनल है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं गाइस। हम लोग कल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल स्टार्ट हो रहा है, तो हम मैच खत्म होने के बाद तुरंत ज्वाइन करेंगे, आप लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। और ट्विटर और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें, इट्स गौरव अयान के नाम से ही हूँ। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। धन्यवाद मिश्रा जी और रुपेंद्र जी।